this is Siva Singhal and I have started this new initiative. Okay, so in this new initiative we are going to talk about the all important news articles, okay, whatever is important. So before starting, you can read something about me from this particular slide here. This is me, myself, Siva Singhal. I also teach on Unacademy, so you can check all the courses whatever I have made on Unacademy as well. तो वहाँ आप देख सकते हैं. ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक है, इसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो. अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, सिवा सिंगल 001. ये रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस में. क्लियर है? बाकी बातें आप पढ़ लीजिएगा. और मेरे जितने इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं, जैसे मेरा फेसबुक का पेज और जो टेलीग्राम का ग्रुप है, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा. क्लियर? तो हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पर. तो आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कुमार स्वामी गवर्नमेंट लॉसेस द ट्रस्ट वोट, या ट्रस्ट वोट यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ये क्या पूरा मैटर था, व्हाट वाज द मैटर बिहाइंड इट. सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस एंड जनता दल सेक्युलर, क्लियर, in Karnataka. So what happened after some time, after the election, 15 MLAs were there. They resigned from the ruling party. They said we do not want to live with the ruling party. They resigned. After that there was a confidence motion was there. So what is the confidence motion all about? You should understand this. Actually the confidence motion is the motion which is for parliament as well, specifically for Lok Sabha and for the state assemblies as well. So in that what happens, the opposition party claims for the confidence motion against the ruling party, and ruling party has to show the house is having the confidence in the party, or especially in the prime minister or the CM. So they have to show the confidence against that, okay, against the ruling party. If they are able to maintain the confidence, if they are able to maintain the threshold MLAs number, they will be in party continuously. But unfortunately in Karnataka government, in Karnataka the government could not maintain the confidence, so they had to resign, and hence the Kumar Swamy government has lost the confidence in the house. So the government has been collapsed. Clear? So 19 MLAs expressed the confidence in the government, while 105 जो MLA थे उन्होंने इस मोशन को अपोज किया. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. यही सारी चीजें इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है. एंड रीड मोर अबाउट द कॉन्फिडेंस मोशन एज वेल. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट Modi did not seek the Trump's mediation. You must have heard about it. Donald Trump said that Narendra Modi said to him to come and mediate between the India and Pakistan's Kashmir issue. But Bharat Sarkar, or we can say the central government, said that Modi did not seek the mediation of Trump. So the spokesperson of central government, Mr. Jaishankar, said that outstanding issues between the India and Pakistan can be discussed only bilaterally. Means the Jammu Kashmir issue is the bilateral issue between India and Pakistan. No third party should interfere into this. So they said about it. So it is the news about. And read more about the relation between India and Pakistan. It is extremely important for international relationship for UPSC. Clear? And you should know what was the issue, what was the history behind the Jammu and Kashmir issue. Okay. And what is the current issue is going on. So read about it, and it was on page number 1. Next news about the Boris Johnson to be the next Britain's PM. He will be the next PM of Britain. Okay, he will be succeeding Theresa May, who is the current Prime Minister of Britain. As you must be knowing, there is a issue behind the Brexit. Means British should exit from the European Union. So there was a issue behind it. So now he will be the new Prime Minister of Britain. So remember the name, Boris Johnson. Clear? Okay. Next news about the Sedition case. What happened actually? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेडिशन का केस है अगेंस्ट द कन्हैया कुमार, उसमें ये कहा गया कि पुलिस को और थोड़ा टाइम दिया जाए. पुलिस शुड प्रूव मोर, थोड़ा और जांच करनी चाहिए पुलिस को रिगार्डिंग दैट. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ओवर हियर,
what is the Sedition Act, okay, and under what section it comes. So first of all you need to understand जो सेडिशन है वो आता है सेक्शन नंबर 124A 124A के अंडर ये आता है. एंड द पब्लिक ऑर्डर क्लॉज वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉलोज द freedom of speech to be abridged by a law. It means, as you know, the fundamental rights, we are having the fundamental rights are given to the Indian citizen as well as the foreigners. So these rights are not absolute. We cannot say कि we have the right, we can say anything to anyone. Okay, it's not absolute. Okay, there can be a restriction or reasonable restriction over that. So this is the section 124A or the sedition clause. It is the restriction against our freedom of speech. So this law or this section was introduced in the Penal Code 1870, which was the period of the Lord Mayo. Lord Mayo. So just remember the name when it was introduced, a decade after the IPC. Means IPC introduced approximately 1860, and after the 10 years, after a decade in 1870, this sedition law was introduced. So it was not introduced along with the IPC, it was introduced, or the IPC amended later for inserting this section. Clear? So this thing you should remember, you should know what is it all about, and you should know about the 124A as well. Okay, our next news about UP government bill to tackle the anti-national activities. It is extremely important or related to sedition as well. So the UP government has come up with a bill. The draft bill was approved by the state cabinet recently. It is the matter of the specific state, Uttar Pradesh. You should know about it. Okay, so the bill is seeking undertaking from the private universities that they will not allow their campus to be used for the anti-national activities. Means after passing this bill, the name is written over here, Uttar Pradesh Private University Bill. So this will empower, or this bill will be seeking for undertaking all the private universities. They should not allow, or they should not provide the safe haven for the anti-nationalist. Okay, so this is the bill all about. यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो अपनी जो उनका कैंपस है उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए ना बनाए, जैसे ही जेएनयू में हुआ था. इसके लिए बिल लाया गया है. उस बिल का नाम है उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2019. ये बेसिकली भी बिल है. अभी ये डिस्कस होगा, उसके बाद पास होगा, और पास होने के बाद ये एक लॉ बन जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट विच इज उत्तर प्रदेश. सो द बिल इज मीन टू एनेक्ट एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन for to govern the all private universities. So it is for all the private universities. Clear? So just remember which state introduced the anti-national activity law or the bill. It is Uttar Pradesh. Clear? This can be asked. Next about the NGT, National Green Tribunal. So National Green Tribunal mechanized to scrap vehicles. Actually National Green Tribunal has directed the Ministry of Environment and Forest Climate Change. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को एनजीटी ने कहा है कि आप कंसीडर करिए जो मैकेनिज्म है, जो अनरेगुलेटेड मैकेनिज्म है स्क्रैपिंग ऑफ द व्हीकल्स. जो व्हीकल्स खराब हो जाते हैं उनका स्क्रैप करते हैं. एक तरह से जो उनको तोड़ा जाता है और तोड़कर जो उनके जो पुर्जे बिखर जाते हैं उससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है. तो यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड वर्क अपॉन इट, ऐसा एनजीटी ने कहा है. क्लियर? So there is a need to evolve an appropriate mechanism to set up authorized recycling center. उनको प्रॉपर रिसाइकिल किया जाए. ये सारी बातें एनजीटी ने बोली है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन? इट इज एनजीटी. एनजीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देख लेते हैं एनजीटी के बारे में. सो द एनजीटी, द कंपोजिशन ऑफ एनजीटी इज देयर एंड पावर्स ऑफ एनजीटी इज देयर. तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे लेजिस्लेशन जितने भी आपको मैंने यहाँ बनाए हुए हैं आपके लिए लिखे हुए हैं, ये सारे जो लेजिस्लेशन है ये सब एनजीटी के अंडर आते हैं. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट कम अंडर द एनजीटी परव्यू. क्लियर? एनजीटी के परव्यू के अंदर ये नहीं आता. कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता. बाकी आप यहां पढ़ सकते हैं, ये सभी इसके अंडर आते हैं. एनजीटी जो है उसको एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया था, और पार्लियामेंट का जो एक्ट पास हुआ था वो 2010 में पास हुआ था. द नेम ऑफ द एक्ट इज
NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 क्लियर। सो और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज होते हैं, क्लियर। सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। सो दैट्स ऑल अबाउट द NGT. Next topic is Supreme Court moves to rein in fraudulent builders. Actually, Supreme Court recently gave a verdict. He said that the Amrapali group, which is a group of builders, they will not build any building now, and their RERA license will be cancelled. Supreme Court said this. So cancels the legislation of Amrapali under the RERA, Real Estate Regulation Authority. So in order to build a apartment, or in order to be a builder, a company must register under the RERA. So Supreme Court has said that they should not be allowed, they should not be further given the right to give the getting my point. So the Supreme Court said that the Amrapali will not come under the RERA now. So what happened actually, as Amrapali has been taken out from the RERA, now who will complete the task? So Supreme Court said that now the task will be completed by NBCC, clear. NBCC will complete the task. So you should know about the RERA. What is the RERA all about? This is extremely important for you. So I have given my personal notes over here, so you can read out, and especially read the things which are written in the dark. So extremely important for an exam point of view. So you can take a screenshot as well. Okay, so this is important. Okay, so next one is there are some news, you can check these out. These are the news which are not that much important, but I wanted to include into my lesson as well. So like scrutinize RTI bill, opposition has opposed and they said that जो RTI bill government लेके आ रही है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए. सेंटर प्लान्स टू एक्सटेंड द सेशन ऑफ बाय 10 days अमिड अप्रोर. यानी कि सेंट्रल ने ये कहा है जो अभी करेंटली पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसको 10 दिन और बढ़ा दिया जाए. सेंट्रल ऐसा प्लान कर रही है. असम में जो एनआरसी है पब्लिकेशन उसकी जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दी है, वो बना दी है 31 अगस्त तक. आपको पता है एनआरसी जो है, जो रजिस्टर बनाया जाता है जो असम की पॉपुलेशन है उसके लिए, कि जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो कितने हैं, ओके, और उनको वापस भेजा जाए, इसके लिए ये बनाया गया है. ओके, प्रेसिडेंट डज नॉट मेक थिंग्स अप एड. जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रेसिडेंट को कि अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए जम्मू कश्मीर के मैटर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया है कि प्रेसिडेंट मतलब ऐसा उनके जो उनके साथ के लोग एड होते हैं, जो साथ के लोग होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, उन्होंने दे डिनाइड अबाउट इट. क्लियर. फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर ली पैंग पासेस अवे. जो चाइनीज के फॉर्मर प्रीमियर थे वो पास हो गए हैं. ही इज नो मोर नाउ. एंड L&T प्रॉफिट राइजेस. L&T का प्रॉफिट बढ़ा दिया गया है. एंड IMF हैज कट, जस्ट रिमेंबर दिस, IMF हैज कट द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2020 बाय 7%. 7% के आसपास उन्होंने ग्रोथ इंडिया की मानी है. सो गाइज दैट्स ऑल. कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बातें बता दी हैं, और बाकी आप जो मैंने बताया उसको एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए. दैट्स ऑल अबाउट इट. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. ओके, और फर्दर मैं इसमें लेसन और भी ऐड करता रहूंगा. टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय. आई विल सी यू टुमारो विद द न्यू लेसन. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर यू फाइंडिंग माई एफर्ट्स. कोई भी सजेशन है आप देना चाहते हैं दे सकते हैं. बाय बाय.